Hi guys, so welcome to the software development with Python workshop. So this is the demo class. This will be the demo to your final workshop that will be starting from 12th of this month, and the workshop will go on for 20 days. Okay, so without a delay, let's go on to the description about this workshop. Let's see what this workshop is about, and let's start with the workshop which will be going through. Okay, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस वर्कशॉप में हम सीख क्या रहे हैं. ये वर्कशॉप बेसिकली है क्या चीज. ठीक है, आई शेयर द स्क्रीन ताकि जो मॉड्यूल्स हैं वो मॉड्यूल्स आप लोगों को भी दिख जाए, सबके लिए सेम तरीके से आसानी से रहे. सो ओके, basically what this workshop will teach you everything about software development using Python as a programming language. So basically what Python is, पहले इसको समझते हैं. Like every programming language, Python is also a programming language which is a little bit easier for us to understand, जिसको हम थोड़ा आसानी से समझ सकते हैं, थोड़ा आसानी से उस पर काम कर सकते हैं. The only difference being Python is an interpreted language. This means in Python, when we start or when we compile our thing, when we run our project, when we run our code, this is not compiled as a whole. इसमें एक एक लाइन एग्जीक्यूट होती है, एक एक लाइन करके करता है. पहले it takes the first line of your code, interprets that, converts that into machine language, executes that line and then moves to the next line. इसके हमें कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं. हम वर्कशॉप में आगे इसको समझेंगे इसके क्या एडवांटेजेस क्या डिसएडवांटेजेस हैं. बट इन मेनी केसेस द एडवांटेजेस आउटवे द डिसएडवांटेजेस. इसका काफी फायदा होता है हमें इसको इस वजह से, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप एक एक लाइन बाय लाइन चलता है. इसको हम एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं. नाउ देयर इज अ मिसकंसेप्शन अबाउट पाइथन. Okay, yes, there is a misconception about Python. This misconception is that Python started in 2007. Well, that is somewhat correct, but Python was originally developed in 1995. Yes, the difference is in 2007 the movement for shifting to Python caught fire. It was in 2007 it was used in Instagram's algorithm for मशीन लर्निंग एंड अडेप्टिव, जिसके एल्गोरिथम से तुम वो अडेप्टिव वो अपने फीड्स देखते हो, दैट वाज बेस्ड ऑन पाइथन. नाउ जब भी हम इसका ग्राफ देखते हैं, जब भी हम बोलते हैं पाइथन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2007, हम उसमें पाइथन की बात नहीं कर रहे हैं, पाइथन 3.0 की बात कर रहे हैं. जिस पाइथन पे हम आज काम करेंगे, जो आज से जिस हम पाइथन को देखेंगे, दैट इज 3.8. काफी आगे बढ़ चुका है पाइथन. तो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स लुक ऑन टू द कोर्स लेआउट. This course is divided into a few modules, 9 modules to be exact, जिसमें हम पूरा अच्छे से पाइथन को स्टार्टिंग से बेसिक से लेके एडवांस तक सीखने वाले स्टेप बाय स्टेप. जिसके लिए ऑब्वियसली हमारा फर्स्ट मॉड्यूल क्या होगा, जो सारे लैंग्वेजेस में जिससे शुरू करते हैं, इंट्रोडक्शन टू दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर. इस सॉफ्टवेयर में वील स्टार्ट बाय लर्निंग व्हाट इज पाइथन, जिसका मैंने एक छोटा सा ब्रीफ इनकैप्सुलेशन आपको दे दिया है. हाउ टू इंस्टॉल पाइथन, जो मैं नेक्स्ट इस डेमो क्लास में समझाने वाला हूँ. और पाइथन की कितनी सारी आईडीज हैं जो मैं इस डेमो क्लास में बता रहा हूँ. दिस विल बी रिपीटेड इन द वर्कशॉप जस्ट बिकॉज काफी सारे लोग जो आज हमारे साथ हैं, मे बी उनसे कई ज्यादा डिफरेंट लोग हों वर्कशॉप में, या फिर कुछ लोग मतलब अलग अलग जगह से भी आए. तो इट विल बी important to cover all these things again when we start the workshop, but we'll cover these first 4 points today in this demo class. So in the module 1 we learn the basics of the programming language, the scripting language Python, जिसमें हम इसके सारे बेसिक वेरिएबल्स, बेसिक प्रिंटिंग वगैरह जो हम सारे लैंग्वेज में सीखते हैं, we'll learn that. Next we'll move on to some special things. Python की एक लिस्ट, डिक्शनरीज और फंक्शंस, कुछ ऐसी स्पेशलिटीज हैं जो इसे बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से डिफरेंशिएट करती हैं, एक्सेप्ट द केस ऑफ रूबी. रूबी इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें इससे काफी कुछ सिमिलर है. So we'll see upon the list, dictionaries and functions. ये हम पाइथन में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ये पाइथन में क्या चीजें हैं, किस तरीके से ये सारे काम करते हैं, और इन सब पे क्या स्पेशल चीजें हम लगा सकते हैं. And the module 3 will conclude our basic introduction to Python, which will include loops and conditional statements. if else कैसे डालें, अगर हमारे पास कोई पर्टिकुलर चीज आ रही है उसके बेसिस पे हम कुछ चीज डिफरेंट कैसे करें, हमें कुछ स्टेटमेंट्स रिपीट करने हैं वो कैसे करें, लूप्स होते क्या हैं. ऑल दिस विल बी डन
within a week of of the workshop, first week will consist of basic Python, just say you'll get a solid base to start this journey with us. So within the first week, you'll be well versed with your Python language. After that, the module that we're including is live practice. And this practice, don't get me wrong here, this practice will be inspired by real life problems. ऑनलाइन या फिर रियल लाइफ में या फिर किसी कॉलेज से कांटेक्ट करके जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होंगी उन प्रॉब्लम्स को विल लुक अपॉन एंड विद दिस विल मूव ऑन टू द स्पेशल पार्ट ऑफ दिस वर्कशॉप, दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, क्यों होती है, किस लिए इंपॉर्टेंट होती है, उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आफ्टर दिस आई गिव यू, बट इट विल बी कवर्ड इन डेप्थ इन द वर्कशॉप. उसके बाद we'll see how to manage and create a database using Python. डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए सॉफ्टवेयर यूज होते हैं जैसे कि एसक्यूएल वगैरह वगैरह, बट इन चीजों को हम पाइथन से भी कर सकते हैं. डायरेक्टली पाइथन से कैसे करेंगे हम वो देख सकते हैं, हम वो देखेंगे इनफैक्ट. एंड इसी में हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी भी इंक्लूड होती है. पांडास का नाम काफी लोग ने सुना होगा. पाइथन जिस जो जो पाइथन के बारे में देखता है, जो जो पाइथन के बारे में सुनता है, you have ought to be heard about this library known as pandas. This library is the main library that you will use in machine learning. तो यहाँ पे एक machine learning का भी एक glimpse देखने को मिल जाएगा. This glimpse will have you head to heels, will help you head to heels in this Python language with machine learning. नाउ आफ्टर दैट हमने यहाँ तक कर लिया, पाइथन की डेटाबेस मैनेजमेंट कर ली, सब कुछ कर लिया. बट उसके बाद जो इस वर्कशॉप का जो मेन फोकस है दैट इज क्रिएटिंग सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो हमें बाकी डिफरेंट प्रोग्रामिंग से, तो बाकी डिफरेंट स्क्रिप्ट से डिफरेंशिएट करती है, दैट इज GUI, द यूजर इंटरफेस. काफी सारे कोडर्स इनफैक्ट पीछे इसलिए रह जाते हैं क्योंकि उनको यूआई डेवलप करना नहीं आता. तो यहाँ पे हम यूआई डेवलप करना भी सीखेंगे. एंड द थिंग इज, यूआई अगर डेवलप भी कर लेते हैं काफी लोग, तो उसको हम क्रॉस प्लेटफॉर्म नहीं कर सकते. हम ऐसे नहीं कर सकते कि हमने यहाँ पे अपने कंप्यूटर पे एक यूआई डेवलप करा, हम किसी और को, अपने फ्रेंड को यूआई दे दें जिसको जरूरत थी, और वो उसको डायरेक्टली पाइथन को बिना इंस्टॉल करे चला ले, राइट? सो व्हाट विल बी लुकिंग एट इज सम स्पेसिफिक मॉड्यूल्स जो उसको .exe में फॉर विंडोज एंड .pkg में फॉर मैक में कन्वर्ट कर सके. What will that give you an advantage of? You can send your code as a software to your friends, to your families, to anyone in the world. They can run that software without even installing Python. Just जैसे हम कोई भी सॉफ्टवेयर को रन करते हैं, जस्ट उसको डबल क्लिक किया, दैट यूआई विल कम इन फ्रंट, उसका पीछे का डेटाबेस पूरा अच्छे से वर्क करेगा. आई विल शो यू वन एग्जांपल फॉर अ कंपनी, a billing software that was made using this same techniques. I'll show you the example. उसके बाद जितने भी हमने पहले एग्जांपल्स करे थे जिनको सिर्फ स्क्रिप्टिंग के थ्रू किया था, एंड इनफैक्ट उससे भी ज्यादा आगे कुछ और एग्जांपल्स हम लास्ट मॉड्यूल में उनमें से किसी के एग्जांपल को उठा के you will take that upon as your main course, as your main project, and create a software for that. So this will be our basic module system, our basic path, our basic thing that we'll be following. And I don't think you will have a doubt in these topics because this is just an introduction. So, if you don't have any doubt, I'll give you a 30 seconds for your doubts. If you have any, you can type in or you can ask. But if you don't have any doubts, I'll move on to the next topic, which is introduction to Python, how to download these softwares, these IDEs, what are IDEs, and then let's look up to some examples, particularly the one that was made for a particular company as a billing software. Okay, so your 30 seconds start now. And by that time I'll be setting up the softwares and all those things in the background.
Yes, Darshan, we will be giving you an example of what type of softwares you'll be making, how you'll be making them, and okay, there is someone else who is having a doubt. We will be giving you an example of that. So let's move on. जब तक वो डाउट आ रहा है, जैसे ही डाउट आएगा आर्यन का, we'll take that doubt. But by that time, let's move on to the next topic, which is introduction to Python itself. तो जैसे मैंने बताया, Python is basically a interpreted language जो एक के बाद एक चलती है, एक के बाद एक लाइन उसमें करते हैं. Are we going to cover web development with this Python as well? No, we are not going to cover web development. Web development के लिए हम काफी different चीजें integrate करते हैं. We'll be developing स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर जो किसी भी को भी पेन ड्राइव में कॉपी करके या ऑनलाइन अपलोड करके सेंड कर सकते हो, और उस बंदे को सिर्फ वो सॉफ्टवेयर पे डबल क्लिक करना है एंड दैट सॉफ्टवेयर विल रन फॉर दैट पर्सन इंडिपेंडेंट, अगर वो विंडोज के लिए डॉट ई एक्स है या फिर उसके लिए मैक के लिए डॉट पी के जी है. वो डिफरेंस एंड में कवर करा जाएगा, वो लास्ट में तो उसके पैकेजेस देखेंगे. बट नो, वेब डेवलपमेंट विल नॉट बी कवर्ड इन दिस. ओके, सो बेसिकली व्हाट जैसे मैंने पहले बताया, गेटिंग बैक टू द टॉपिक, पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज. वो एक स्टेप बाय स्टेप काम करती है. तो हम बेसिकली सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने से पहले एक बार देख लेते हैं पाइथन कैसी है, पाइथन पे क्या चीज हो रही है. वी विल इन download the softwares. I'll tell you how to download these softwares right now, but let's look up on the software. I'll be sharing my screen now. As I told you that Python is an interpreted language and it works line by line, we'll see how exactly Python works on this IDLE, idle. Basically, what an idle or IDE is basically an डेवलपिंग एनवायरनमेंट. एक एनवायरनमेंट जिसपे आप लोग अपने सारे पाइथन के कोड्स रन करके ट्राई करके पाइथन की स्क्रिप्ट्स रन करके ट्राई कर सकते हो. काफी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आईडीज है हमारे पास. वन ऑफ देम इज द नेटिव आईडीई जो हम यूज करेंगे वर्कशॉप की स्टार्टिंग में. अभी बताऊंगा वो कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. एंड सेकेंड इज जुपिटर आईडीई, Spider IDE, PyCharm, many IDEs. But we'll be mostly working on the native IDE, Jupyter IDE, and स्पाइडर आईडीई. स्पाइडर आईडीई, जुपिटर आईडीई, बाकी सारी पाइचाम वगैरह का एक बहुत बढ़िया कंबाइंड पैकेज है नोन एज एनाकोंडा दैट विल इवन हेल्प यू इन machine learning a little bit. It basically why I prefer that Anaconda over native Python is that there are lots and lots of libraries pre-installed in that. Okay, there is a thing that we have to install libraries while working on Python, specific IDs for specific things. So what we'll be doing is we'll be installing. Okay, why can't we use VS Code? Basically, जब आप VS Code को और Python को combine करते हो, why we are using Python, you have to understand that right now. Python का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है मशीन लर्निंग, ML, AI इन सब चीजों में. जब हम पाइथन का यहाँ पे मशीन लर्निंग एमएल वगैरह का एक एल्गोरिदम बनाते हैं और साइड में हमारे पास डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो VS कोड हो सकता है, वो C++ हो सकता है, मैटलैब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. इट कैन बी कनेक्टेड टू पाइथन, इवन अ वेब ऐप कैन बी कनेक्टेड टू पाइथन, जो होता ही है. बट द थिंग इज फॉर दैट कनेक्शन यू हैव टू राइट लोड्स एंड लोड्स ऑफ कोड, लोड्स एंड लोड्स ऑफ लाइन्स. उस लाइन को लिखने से ज्यादा आसान और ज्यादा छोटा काम हमें पड़ता है हम डायरेक्टली पाइथन के अंदर ही एक सॉफ्टवेयर बना लें. प्लस बिकॉज वी आर डेवलपिंग द होल थिंग ऑन अ स्पेसिफिक ऑन सिंगल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, तो उसमें एरर आने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं. एंड यू गेट लॉट ऑफ एक्सपोजर एज वेल, क्योंकि अगर मुझे कुछ ओपन सीवी या फिर मैटलैब या फिर कुछ मशीन लर्निंग या फिर कंप्यूटर विजन कुछ भी इंपोर्ट करना है, कुछ भी चीज करनी है पाइथन में, तो वो नेटिवली करनी ज्यादा आसान है इंस्टेड ऑफ calling it from another software. That's why we'll be using just Python. Okay, so like what I was saying, yeah,
काफी सारे आईडीज हैं। इट द वन मेजर आईडी, सारे पैकेजेस इंटीग्रेटेड हैं, हमें बार बार डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। इन पाइथन वी हैव टू डाउनलोड स्पेसिफिक पैकेजेस, स्पेसिफिक मॉड्यूल्स फॉर स्पेसिफिक थिंग्स, जो नेटिव पाइथन के अंदर एड-इन्स की तरह काम करते हैं। उन एड-इन्स को ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है एनाकोंडा ने, तो हम वो भी इंटीग्रेट कर लेते हैं। उससे पहले कि हम जाके उन सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करें, लेट्स सी हाउ दिस इंटीग्रेटेड लैंग्वेज वर्क। So as I told you, Python is easier to understand, easier to work with, and works line by line, right? So इसका हम एग्जांपल एक बार देख लेते हैं। जब भी हम पाइथन में कोई आईडीई चलाते हैं, भले ही वो स्पाइडर हो, भले ही वो जुपिटर हो, भले ही वो नेटिव आईडी हो, जैसे मैंने नेटिव आईडी इसका पाइथन में चला रखा है। What it does is whatever we type on this, अगर हम इसमें लिखते हैं 5 + 5, तो वो डायरेक्टली हमें उस लाइन को एग्जीक्यूट करके उसका आंसर दे देता है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 7 × 8, तो वो डायरेक्टली उसको काम करके मेरे को आंसर देता है। सेकंड बिग एडवांटेज ऑफ पाइथन इज हमें इसको डिक्लेयर नहीं करना पड़ता कि हम किस टाइप का हमारा ये पर्टिकुलर वेरिएबल वगैरह है, कुछ भी है। अगर मैं इसको बोल रहा हूँ ए, हमने कुछ भी एक वेरिएबल का नाम दे दिया, ए इज इक्वल टू 88, 89, कुछ भी डाल दिया, तो वो डायरेक्टली हमें इधर बताना नहीं है कि वो इंटीजर है, फ्लोट है, या कुछ भी है। डायरेक्टली ए में वैल्यू स्टोर हो गई 89। ये एग्जैक्टली कैसे हो रहा है, एग्जैक्टली इसके पीछे की साइंस क्या है, कंप्यूटर साइंस में मेमोरी एलोकेशन में क्या काम कर रहा है, ये हम देखेंगे पाइथन में वर्कशॉप में। बट अभी के लिए जस्ट ऊपर ऊपर से हम देख रहे हैं इन चीजों को। हमने कोई भी वेरिएबल का नाम डाला, इक्वल टू वैल्यू। हमें इसमें कुछ डिक्लेयर नहीं करना कि ये किस टाइप की चीज है, क्या है, कुछ इसमें पार्स नहीं करना जैसे हम जावा में करते हैं, जैसे सी में हमें डिक्लेयर करना पड़ता है बार बार, वो चीज नहीं करनी। सेकेंड बिग एडवांटेज इज रीअसाइनिंग। जैसे सी में, जावा में, पाइथन में, जावा में, सी में, बाकी लैंग्वेजेस में, विजुअल बेसिक में, वीएस कोड में, ये चीजें होती है ना कि हम एक वेरिएबल को अगर हमने एक चीज बना दिया तो उसको हम रीअसाइन नहीं कर सकते। अगर हमने इंटीजर का एक वेरिएबल ले लिया, we cannot reassign it that to string. We have to do a little bit of mumbo jumbo to do that. But इसमें हम क्या कर सकते हैं, a is equal to, just दोबारा से वो चीज लिख दी। अब a में एक स्ट्रिंग स्टोर होगी जिसका नाम पाइथन है। मुझे कुछ रीअसाइनिंग के लिए कुछ लंबी चीजें नहीं करनी पड़ी, एक ही वैल्यू वो स्टोर हो गई पाइथन में। मैं इसको दोबारा से रीअसाइन कर सकता हूँ, a is equal to 99.9999। a में अब वो नई वैल्यू फ्लोट वैल्यू स्टोर हो गई। ऐसा नहीं है कि वो स्ट्रिंग की तरह स्टोर हुई है, ये एज एन इंटीजर, एज एन फ्लोट ही स्टोर हुई है। ऐसे देख सकते हो, a + 8 वैल्यू इसने डायरेक्टली जैसे वो स्टार्टिंग में करके दे रहा था वैसे करके दे रहा है। इसको सॉफ्टवेयर जब हम इंस्टॉल करेंगे खुद भी ट्राई कर सकते हो। दिस इज वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ पाइथन दैट वी हैव। दिस इज वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ पाइथन दैट overpowers other programming languages. This is fast to code on, fast to debug, but the only disadvantage right now of Python is that it is slow, a little bit slower than C and Java and all those languages. Slightly slower. Okay, तो अब हम देख लेते हैं हमें डाउनलोड कैसे करना है। हम गए गूगल पे, हमने लिखा python.org। ये पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट है python.org के नाम से, जहां से हम पाइथन की नेटिव आईडी डाउनलोड कर सकते हैं। ये वाली आईडी जिस पे हम अभी काम कर रहे थे। स्टार्टिंग में फर्स्ट वीक में हम पाइथन पे जब तक हम कुछ एडवांस नहीं कर रहे, इसी आईडी से करेंगे, क्योंकि बेसिकली ये आईडी भी आनी चाहिए। जरूरी नहीं है हर जगह तुम्हें तुम्हारे पसंद की आईडी मिले, तो सारी आईडीज का एक एक्सपोजर होना चाहिए। तो फॉर दैट एक्सपोजर विल गेट दिस। हम python.org पे गए, देन विल गो टू डाउनलोड्स। यहाँ पे डायरेक्टली तुम्हारे पास लेटेस्ट वर्जन पाइथन का आ जाएगा, विंडोज, मैक ओएक्स, कुछ भी हो, जस्ट यहाँ पे तुम्हें डाउनलोड का बटन दबाना है। मैक ओएक्स से ये कुछ है तो यहाँ पे दबा के जस्ट पाइथन को डाउनलोड कर सकते हो एंड उसको जस्ट स्टेप्स फॉलो करके इंस्टॉल कर सकते हो। बाय द टाइम दिस डाउनलोड्स, आई विल शो यू हाउ टू गेट एनाकोंडा। जस्ट वापस से गूगल पे गए एंड टाइप इन एनाकोंडा। सबसे ऊपर ऊपर आ जाएगी एनाकोंडा पाइथन की। हो सकता है सांप की भी है, वो सांप वाले ने लेनी। वी आर नॉट लुकिंग एट द स्नेक एनाकोंडा, वी आर लुकिंग एट एनाकोंडा पाइथन डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। Again, the advantage of Anaconda and personal reason why I prefer Anaconda is that it gives a combined library of all the packages, all the modules that will be beneficial to us. इसमें we'll just यहाँ पे भी आ जाता है
प्रोडक्ट्स इंडिविजुअल एडिशन, इसको यहाँ से डाउनलोड करोगे। अगेन एनाकोंडा की वेबसाइट पे गए, प्रोडक्ट्स पे गए, इंडिविजुअल पे गए, यहाँ पे हमारे पास डाउनलोड का आ गया। जैसे उधर आ रहा था लिनक्स, पाइथन, एप्पल वगैरह का, मैकओएस का, यहाँ पे भी सारा वही चीज आ रही है। यहाँ पे विंडोज का बाय डिफॉल्ट दे रखा है एंड एनी अदर्स कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम हियर। यहाँ ये तुम्हें नीचे यहाँ पे, बट हाँ इसमें ये चीज ध्यान रखना, जो तुम्हारे सॉफ्टवेयर का, ऑपरेटिंग सिस्टम का जो गीगाबिट वर्जन है, बिट वर्जन है, 64 बिट हो सकता है, 32 बिट हो सकता है, वो देख के इंस्टॉल करना, वरना थोड़े से ग्लिचेस देता है। जैसे कि मेरा 64 बिट है तो मैंने 64 बिट वाला डाल रखा है। एंड ग्राफिकल इंस्टॉलर प्रेफर करना, कमांड लाइन इंस्टॉलर प्रेफर मत करना। ग्राफिकल इंस्टॉलर से तुम्हें थोड़ी सी आसानी हो जाएगी इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने में। ओके सो जैसे इसको डाउनलोड करोगे, सेम स्टेप्स इसके हैं, सेम स्टेप्स एनाकोंडा के, सेम चीजें करनी है। इंस्टॉल का बटन दबाना है, इंस्टॉल करना है। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं कैंसिल कर देता हूं, ताकि कोई वो दिक्कत ना आए, कोई आगे कॉम्प्लिकेशंस ना आए। ओके सो आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू, the introduction of Python is clear to you, and I hope you enjoyed the basics of this demo class of Python, software development with Python. Now, there is an important thing that you should know. Anyone who is attending this free demo class gets an additional discount of 500 rupees on this Python course. So hurry up, the seats are limited, the time is limited, the time for which this offer is available is 2 more days. After that, this workshop will go to back to its original price, which is 39.99. I hope I see you in the workshop. If you have any doubts, you can either contact me or you can write in here. And I hope you like this demo class. You have 30 seconds for the questions. Okay, Devesh, what I'll do is I'll upload the PDF right here. जो PDF है मैं उसको डायरेक्ट यहीं पे तुम्हें अपलोड करके दे देता हूँ। यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। Okay, what I'll do is I'll add this PDF to the website. वेबसाइट का लिंक मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। उसी वेबसाइट से you can even get the register for the